सो ये देखो तुम आम लास्ट क्लास ऑलरेडी आम देखिलु अबाउट दिस बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर विषय में देखिलु प्लस वॉल्यूम एनर्जी सरफेस एनर्जी करेक्शन टर्म गुड़ा एक्चुअली हम सब देखिलु राइट ओके सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला 48 48 पर नहीं जीवा राइट ना राइट ओके ग्राफ भी जीवार पर नहीं ग्राफ ना ग्राफ ग्राफ लगा ठीक है ओके राइट ओके सो लास्ट टॉपिक को जीवा आमे यूनिट रो सो लिखि दियो ताको दैट इज न्यूक्लियर सेल मॉडल होला तो हम एक्चुअली न्यूक्लियर मॉडल विषय में पढुचलु न्यूक्लियर मॉडल विषय में पढुचलु तो तार गोटे ऑलरेडी मैं पढ़ी जाइलु दैट इज आवर न्यूक्लियर ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप मॉडल सॉरी लिक्विड ड्रॉप मॉडल एटा ऑलरेडी सर जाइछि तो तार गोटे सेकंड जिंस रहला दैट इज कॉल्ड एज सेल मॉडल एटा एक्चुअली हम आज देखिबा होला माने थियोरेटिकल एसेप्ट बहुत अछि मैथमेटिकल सेमति किछि जिंस नाही ओके सो कोन एक्चुअली सेल मॉडल कहउछि the cell model of the nucleus assume that energy structure of the nucleus is similar to that of an electron cell in an atom okay तो अबे जो हमें एटॉमिक मॉडल हमें जो पढ़िलु ओके सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर तो हमें पढ़लु एक्चुअली कोन न्यूक्लियस एटा मझे रहला आ इलेक्ट्रॉन कोन होछन तमर डिफरेंट ऑर्बिट एक्चुअली कोन होछन माने न्यूक्लियस चारपट एक्चुअली समान ये रोटेशन करछन एक्चुअली हम पढ़थिलु राइट तो सेल मॉडल भी कोन कहउछि तमरो न्यूक्लियस सपोज न्यूक्लियस भितरे जो आसिला तमरो जो न्यूक्लियन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जहाँ भी रहउछन तम न्यूक्लियस भितरे सेमानकर भी एक्चुअली समान डिफरेंट सेल्स रे तमरो जिमती इलेक्ट्रॉन गुडा जिमती माने रहउछन डिफरेंट ऑर्बिट रे जिमती रहउछन डिफरेंट सेल रे रहउछन सेमती प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी तम न्यूक्लियस चारि पटे सेमती डिफरेंट माने सेल टाइप रो स्ट्रक्चर करी से माने रहउछन बोल से कहला ओके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ग्रुप्ड इन सेल्स in the nucleus similar to extranuclear electrons in the various cell outside the nucleus माने इलेक्ट्रॉन रो माने न्यूक्लियस एटा न्यूक्लियस रहला एटा सो न्यूक्लियस बाहर एठी सब कोन रहला इलेक्ट्रॉन रहला सो लेट मी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन सम अदर कलर सपोज एटा इलेक्ट्रॉन गुडा सब हमर डिफरेंट एटा इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट करछन एटा हला एट सब जाक सेल कोन अछन इलेक्ट्रॉन अछन तो जेमति इलेक्ट्रॉन गुडा तमरो आउटर मोस्ट जो सेल गुडा जेमति ऑर्बिट करछन रोटेशन करछन इन द रहउछन तो सेमिति न्यूक्लियस रो भितरे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी सेमती टाइप रो ही अरेंजमेंट रो अछन बोल की प्रपोज कराला ओके द सेल्स आर रिगार्डेड एज फील्ड व्हेन दे कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बोथ जेमती हमर एठी हमर एक्चुअली गुड फार्मूला थिला 2n² रूल वाला गुड जिंस थिला तुम जानि थिबो ओके सो जे तो जोठी n होची तमर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने तमर फर्स्ट सेल KLMN सेल उडा सब थिला KLMN सेल उडा थिला तो हम जानि 2n² एठी माने दुईटा इलेक्ट्रॉन रहबो एठी कोन 8टा इलेक्ट्रॉन रहबो एठी केतर रहबो 9 2 18टा इलेक्ट्रॉन रहबो एन सेल रे केतर इलेक्ट्रॉन रहबो एटा हमें 9 3 ला 4 4 2 4 16 16 32टा इलेक्ट्रॉन रहबो एटा हमर इलेक्ट्रॉन पई थिला ऑलरेडी हम जानिछु 2n² रूल अनुसार हमर इलेक्ट्रॉन फिल हेबे तमर ऑर्बिट रे सेमिति ए जो ए भितरे जो हमर जो सेल उडा जो रहिला कोठी हमर न्यूक्लियस भितरे जो सेल रहिला सेठी भी एक्चुअली कोन वो स्पेसिफिक गुटे गाइडलाइंस अछि से गाइडलाइंस जो फिल अप हैला माने गुटे एक्चुअली तमर न्यूक्लियस उडा हाईली स्टेबल एक्चुअली गुटे स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन करथले ओके सेडा कहला से द सेल्स आर रिगार्डेड एज फील्ड व्हेन दे कंटेन a specific number of proton or neutron or both the number of nucleon in each cell is limited by Pauli's exclusion principle मैं ऑलरेडी हम जान छु Pauli's exclusion principle जोडा अछि Pauli's exclusion principle हला सो सेही अनुसार तमरो डिसाइड हो तमरो गोटे सेल रे केते नंबर ऑफ एक्चुअली न्यूक्लियंस रही पारे माने न्यूक्लियंस इन द मींस प्रोटॉन भी हे पारे न्यूट्रॉन भी हे पारे और बोथ भी हे पारे ओके सो इट एक्चुअली गुड प्रपोज कराइतला मॉडलटा राइट तो आर एविडेंस बहुत सारा अछि सो एक्चुअली एविडेंस गुडा देखिबा एक्चुअली हमर कोन एक्चुअली एविडेंस रहउची
evidence. Okay, so bullet point wise mu lekhi dochi evidence kon it is known that a nucleus is stable if it contain a definite number of either proton or neutron. These are called as magic numbers. So it actually lekhi word actually important question da topic ro magic number concept ta magic number se कहला जे गोटे न्यूक्लियन गोटे माने गोटे न्यूक्लियस सपोज आसला गोटे न्यूक्लियस सो सेठी जदि एक्चुअली गोटे डेफिनेट नंबर ऑफ गोटे डेफिनेट नंबर ऑफ जदि तुमरो इधर प्रोटॉन रो और न्यूट्रॉन रो गोटे नंबर रहले सेमान एक्चुअली तुमर कोन होची गोटे हाईली स्टेबल न्यूक्लियस सेमान एक्चुअली फॉर्मेशन करथले हाई स्टेबल गोटे न्यूक्लियस फॉर्मेशन करथले हला तो से जो नंबर से जो डेफिनेट नंबर जो अछि आकु कहतला तुमर कोन मैजिक नंबर बोली कहतला मैजिक नंबर से नंबर उडा देखो मन रखो इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मैजिक नंबर एक्चुअली कोन कोन रहउची मैजिक नंबर रहला 2 8 20 50 82 126 आपको मैजिक नंबर बोली कह जाए तो मैजिक नंबर माने कोन माने जदि तुमरो गोटे न्यूक्लियस रे एई नंबर रो जदि से माने कोन रहले इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बोथ जदि रहले एई नंबर जदि आसला मान कोले गोटे एक्स्ट्रा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस एक्चुअली से माने फॉर्मेशन करसुले ओके तो ए नंबर उडा क्वाड रो आसला सेटा आसीबा पई भी एक्चुअली डिफरेंट थ्योरीज उडा सब दिया आइतला जोटा कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस हम डिस्कशन करिया कथा ओके सो बहुत डिफरेंट मॉडल एक्चुअली प्रपोज करा हला को एक्सप्लेन करिया पई बट सक्सेस सब सक्सेसफुल मॉडल एक्चुअली आसला सेटा होची कहबो एलएस कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोली कहबो हला सो एटा सक्सेसफुल जो नंबर आसुची किमती सो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ना एटा एक्चुअली तुम पीजी कांसेप्ट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग टा तुम माने इलेक्ट्रॉन रो ऑर्बिटल मोशन आ तार इलेक्ट्रॉन स्पिन समान कपलिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हेले तुम ए एग्जैक्टली ए नंबर उडा प्रोड्यूस हे परियो सो एक्चुअली तुम पीजी रे एक्चुअली पढाबो तुम यूजी रे नाही बट जानि थो ए जिंस उडा अछि बोली ओके सो जेतोळे गोटे न्यूक्लियस रे जदि एई नंबर उडा जेतोळे आसिला 2 8 20 50 82 126 समान उडा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस एक्चुअली फॉर्मेशन कले ओके सो दैट इज कॉल्ड एज आवर मैजिक नंबर बोली कहला ओके तो ये जो मैजिक नंबर फेवर एक्चुअली केतरा हमें पॉइंट देखबा ए नंबर उडा एक्चुअली केतरा एग्जांपल माध्यम रे देखिबा सो दैट विल बी ए मींस उडा प्रूफ टाइप रे आसियो ओके सो फर्स्ट देखिबा हमें कोन द इनर्ट गैसेस विथ क्लोज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर cells exhibit highest degree of chemical stability. Similarly, nucleates with nuclei containing magic number of nucleon have the same exhibit more average stability. Okay, so अब देखो हमारे जो inert gases जो कहला inert gases कहला कौन कौन inert gases अच्छी हमारे periodic table रे helium तापरे neon argon krypton xenon आउ रेडन एटा समस्त जानि थियो एटा इनर्ट गैसेस राइट सो इनर्ट गैसेस माने कोन एमान को एक्चुअली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अछि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने कोन तंगर एक्चुअली आउटर मोस्ट सेल एक्चुअली फील्ड अछि हला इधर आउटर मोस्ट सेल इधर दुईटा और आठटा इलेक्ट्रॉन जदि रहइबो ताकू इनर्ट गैसेस और स्टेबल इलेक्ट्रॉन माने मानकर कोन माने ना इलेक्ट्रॉन देबे ना ताकू इलेक्ट्रॉन दरकार हैला तो ताकू इलेक्ट्रॉन का सको तो शेयर करिवार ना इतके ताकू इलेक्ट्रॉन पाइबार भी नहीं तो सेति पे से माने का तो रिएक्शन भी करनते नहीं सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस सो नॉर्मली दे डोंट रिएक्ट विथ एनी अदर गैसेस सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस रे भी जिन को आला सो न्यूक्लियस रे भी कोन आला तो सेम टाइप रो आसला सो जेतोडा हमर मैजिक नंबर इक्विवेलेंट जदी से माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बोथ जदी रहउचंदी तो से केस रे भी तुमरो एक्सटर्नरी टेबल स्टेबिलिटी पड़े जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन हमर बाहर जिंद बोलचन ताकर जो बडा प्रॉपर्टी रहउची न्यूक्लियस पॉइंट भीतर भी से मैजिक नंबर जदी आसला माने ताकर स्टेबिलिटी अधिका हे जाउची ओके सो एटा गोटे तुमर पॉइंट आसला सेकंड पॉइंट देखिबा कोन अछि सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट isotopes of element having isotopic abundance greater than 60% belong to magic number category okay so जो हमर isotope पढा हितला isotope of elements having isotopic abundance greater than 60% belong to मैजिक नंबर कैटेगरी तो माने कोन
माने जो एलिमेंट आइसोटोप गुड़ा अच्छी और एंड दार एबंडेंस 60% ରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ମେଜିକ୍ ନମ୍ବରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମେଜିକ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲା ମାନେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଇସୋଟୋପଙ୍କର ଏବଣ୍ଡେନ୍ସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଓକେ ସୋ ଥାର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖୁଛି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଲି ମନେକର ଏସ୍ଏନ୍ ଟିନ୍ ହେଲା ଟିନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ତ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଇଏ ନମ୍ବର ହେଲା 50 ଓକେ तार एक्चुअली 10 स्टेबल आइसोटोप अच्छी 10 स्टेबल आइसोटोप ओके सेमती देखो कैल्शियम आसला कैल्शियम आटोमिक नंबर है 20 40 है आर 6टा स्टेबल आइसोटोप अच्छी 6टा स्टेबल आइसोटोप अच्छी तो देखो ये केस रे जेड रो वैल्यू केते आसला टीन केस रे 50 आ एटा कैल्शियम केस रे आसला 20 सो दी बोथ आर मैजिक नंबर ना दीटा देखो मैजिक नंबर जो लिखा है केते लिखा है मैजिक नंबर ये 2 8 20 50 सो 20 50 अच्छी तो जो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो यही नंबर जो छुई जाऊँगी स्टेबल आइसोटोप एक्चुअली एबंडेंसटा पड़ जाऊँगी तो देखो टीन केस रे 10टा कैल्शियम केस रे 6टा पड़ जाऊँगी सो मीन्स आम मैजिक नंबर कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे आम एज्यूम करिया ओके सो नेक्स्ट आउ गोटे एलिमेंट देखिए आम होची तुम एक्चुअली जो आम जो पढ़ा एक्चुअली रेडियोएक्टिव डिके आम पढ़ा फोर्थ पॉइंट देख सो फोर्थ पॉइंट एक्चुअली तुम कौन आसला फोर्थ पॉइंट कौन आसला द थ्री मेन रेडियोएक्टिव सीरीज दैट इज यूरेनियम एक्टिनियम एंड थोरियम सीरीज डिके टू तो आम जो आम रेडियोएक्टिव एलिमेंट हेवी न्यूक्लियर गुड़ा जो डिके करती से सब एक्चुअली आपको डिके करती पीबी को दैट इज 82 208 सो ये केस रे देखो जेड रो वैल्यू केते आसला डेफिनेटली 82 आसला एंड एन रो वैल्यू केते आसीबो दैट इज 208 माइनस 82 8 2 गले 6 10 रो 8 गले 2 ये हला 126 राइट सो बोथ आर कौन मैजिक नंबर राइट 82 126 मैजिक नंबर तो देखि दे सॉरी yes 82 126 एटा भी मैजिक नंबर सो जदि हमर पीबी माने एक्चुअली देखो हमर जो यूरेनियम रहला और तुमरो जो दुईटा सीरीज आसला गोटेला एक्टिनियम सीरीज आ गोटे थोरियम सीरीज गोटे अछि थोरियम सीरीज आसला तो एमाने जेतोले डीके आसीबे सब बेले एक्चुअली एमाने दे बोथ ऑल डीके विथ टू लीड पीबी 82 208 कहीं ये देख मीन्स दस लीड इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप सो एक्चुअली गोटे स्टेबल आइसोटोप से एक्चुअली आपको डिके होती पाखापाखि एलिमेंट भी डिके हो पारि था कहीं पीबी पाखे तो अलग अलग जिनस अच्छी कौन अच्छी देख आम जो पीरियडिक टेबल देखा ये पीरियडिक टेबल जो आम देखा फाइल कौन तो ये देख पीबी आसला पीबीटा तुम कौन 82 सीआर पीबी 82 मैं आउट कर्सरटा रखी तो अब जब आम यूरेनियम डिके है और जो तुम जो थोरियम सीरीज है और एक्टिनियम सीरीज जहाँ भी डिके होती से मैंने पाखे तो केते अच्छी बिस्मथ अच्छी ये पोलोनियम अच्छी एस्टाटाइन अच्छी ये थैलियम अच्छी तुम और बहुत गुड़ा एलिमेंट अच्छी ताकू नई पीबी को कहीं होती है तो तार रिजन आम एक्चुअली डायरेक्टली एक्सप्लेन करें बिकॉज तार कौन अच्छा मैजिक नंबर तार माने बोथ जेड भी मैजिक नंबर बिलोंग कर एंड एन भी मैजिक नंबर बिलोंग कर सो से वी कैन से दैट दिस लीड है एक्चुअली स्टेबल आइसोटोप अच्छे बोली आम ये कर ओके नेक्स्ट 5 नंबरटा ओके 5 नंबर पॉइंट कौन अच्छे देखा 5 नंबर पॉइंट इट हैज बीन फाउंड दैट न्यूक्लियर हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन equal to magic number cannot capture a neutron because the cells are closed and they cannot contain an extra neutron okay so जोड़ा पाइलो हमें so जो न्यूक्लियस रे तमरो number of neutron is equal to some magic number माने जो न्यूट्रॉन मैजिक नंबर ऑलरेडी अचीव कर देइछंती ऑलरेडी they cannot capture neutron so they cannot capture neutron because the cells are closed
because the cells are closed and they cannot contain can't contain extra neutron है तार माने एक्चुअली देख तुम जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट जो पड़े आसला जदि गोटे सेल जदि ऑलरेडी फिल हो जाइए मंकर गोटे बकेट तुम पानी ऑलरेडी भर्ती कर देछ सेठी आ पानी देले धरिबो कि हबने तो एलाउ ही हबने सपोज गोटे मनकर बस है कि तुम बाइक है कि किसी है मनकर मैक्सिमम 3 लोग जीवार था 3 होगा तापर एक्सट्रा अच्छी जगह अच्छी कि ना तो जदि गोटे आमर गोटे सिस्टम रे गोटे न्यूक्लियर सिस्टम रे ऑलरेडी मैजिक नंबर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रही जाइए है तो एक्सट्रा न्यूट्रॉन आसिक रही जगह नहीं तो आसो कमी आसपार नहीं तो यहाँ गोटे एक्चुअली आम जो आसला हाँ दैट जो है न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जदि मैजिक नंबर इक्विवेलेंट अच्छा है माने मैजिक नंबर माने आम जो नंबर कल 2 8 20 50 82 126 यही नंबर ऑफ जदि न्यूक्लियन रहा माने आउ एक्सट्रा न्यूक्लियन आसले एक्चुअली ठीक सिस्टम रे बसी पार ना तो यहाँ 5 नंबर पॉइंट एंड लास्ट 6 नंबर पॉइंट देखा कौन अच्छी it has been found that some isotopes are spontaneous neutron emitters while excite above nucleon binding energy by preceding a beta decay. These are oxygen, krypton, xenon, for which n equal to can be written. Okay, so देखो एबे it has been found that some isotopes are spontaneous neutron emitters है तो केतरा isotope some isotopes are spontaneous neutron इमिटर्स माने एक्चुअली से माने इमीडिएटली एक्चुअली से माने न्यूट्रॉन जल्दी जल्दी एक्चुअली से माने इमिट कर दियंती बाय ए बीटा डीके हला बीटा डीके करके से माने कोन करंती न्यूट्रॉन इमिट कर दियंती एग्जांपल देखम कहले जान परबो गोटे हला ऑक्सीजन 817 तापर आउट असला क्रिप्टॉन 3687 आउट असला तमरो जेनॉन 54 137 ओके सो ये जो आइसोटोप गुडा हला माने स्पॉन्टेनियस न्यूट्रॉन एक्चुअली इमिट करते कौन पाई करते से देखा तो यही केस देख यही केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते आसीबो जस्ट सिंपली माइनस कर दियो माइनस कले पड़े आसला 17 माइनस 8 केते एटा 9 आसला एटी माइनस करो केते आसला 7 रु 6 गले 7 रु 6 गले 1 8 रु 5 गले 8 3 गले 5 एटी आसला n इक्वल टू 51 आसला आ एटी n इक्वल केते आसीबो 7 रु 5 7 रु 4 गले 3 एंड 13 5 गले 8 82 आसला ओके सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसला सो मु आको लिख पाउची n इक्वल टू 8 प्लस 1 एठी मु n इक्वल लिख पाउची 50 प्लस 1 आ एठी मु n इक्वल लिख पाउची 82 प्लस 1 लिख पारिबा आराम से सो देखो 8 एटा गुड मैजिक नंबर 50 भी गुड मैजिक नंबर 82 भी गुड मैजिक नंबर हला तो एमान कर कोन गोटे गोटे न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा अछि सो माने जदि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो छाड़ देले माने कोन हिजबे मैजिक नंबर अचीव करले माने स्टेबल हे गेले तो सेट में दे आर स्पॉन्टेनियस न्यूट्रॉन इमिटर्स बुझा पड़ला okay so if we interpret that the loosely bound neutrons as valence neutron this neutrons 85082 represents greater stability as compared to other neutron number बोले बुझा पड़ला तो ये जो हमर सीरीज आसला आइसोटोप गुडा आकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोन अछि जस्ट गोटे गोटे एक्स्ट्रा अछि एज कंपेयर्ड टू आवर मैजिक नंबर सो सेट पे एक्चुअली दे आर स्पॉन्टेनियस न्यूट्रॉन इमिटर्स ओके सो ये जो 6टा पॉइंट बाबद आम कंक्लूड कले दैट तुम जो सेल मॉडल जोटा है सो दैट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ओके तो एक्चुअली बेसी डिटेल भीतर आम जीवा ना डिटेल एक्चुअली कैलकुलेशन तुम एलएस कपलिंग अच्छी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल गुड़ा अच्छी तुम हाई स्टैंडर्ड रे पड़ो ओके सो द सेल मॉडल is able to account the several nuclear phenomena that is in addition to magic number it is observed that even when nuclei are generally more stable than ordered nuclei in the se explain kari parla ko okay so according to Pauli's principle a single energy sublevel can have a maximum 2 nucleons one spin up and one spin down therefore in an even nucleus only completed sublevels are present which means more stability okay so जो nuclear cell model actually जो कहले जोटा मु कहली एठी पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गोटे जिनस लिखी देख कौटे गोटे या ये तुम कहला जो तुम न्यूक्लियन गुड़ा न्यूक्लियस भितर आम डिफरेंट डिफरेंट सेल रे एंड दे मस्ट ओबे पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब मन थी तुमको जानथिबो जे गोटे लेवल जदि आसला ये मैक्सिमम एक्चुअली 2टा जिनस ही रही पार गोटे अप स्पिन गोटे डाउन स्पिन एक्चुअली आम रही पार कहते है तो ये केस जब देखा सो आम जो न्यूक्लियस सब लेवल जो आसला सो ऑब्वियसली जो कहते इवेन जदि आसला दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑड बोल से कहूँ है इवेन स्टेबिलिटी अधिका
आर एक्चुअली टिके कम बोली कहूँ सो ये एक्चुअली आम पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आम प्रमाण कर दे पार्छु केमती बिकॉज सिंगल एनर्जी सबलेवल कैन हैव मैक्सिमम 2 न्यूक्लियस वन स्पिन अप वन स्पिन डाउन therefore in an even nuclei only completed sublevels are present which mean greater stability जब even हेगला even number जब हेगला तो जेतिक सब लेवल अच्छे सब जगह कौन है सब फिल हो जाए किसी ने ऑड ऑड हेले कौन आसो गोटे गोटे इनती लेवल रहिबो जोठी एक्चुअली सिंगल थिबो इलेक्ट्रॉन सिंगल थिबो तो एज कंपेयर टू सिंगल पेयर वाला स्टेबिलिटी एक्चुअली कौन आसो अधिक आसो ओके on the other hand ordered nucleus contain incomplete sublevel for both kind of nucleus which mean lesser stability right so एमान जदि pairing हेले so pairing हेले एक्चुअली तमरो energy minimization होबो and that will lead to greater stability ओके सेटा को केस रे मडिबो इवन केस रे मडिबो ऑड ऑर्डर कोन होचिन गोटे गोटे एक्स्ट्रा एक्चुअली रहि जिवो गोटे प्रोटॉन गोटे एक्स्ट्रा गोटे न्यूट्रॉन गोटे एक्स्ट्रा रहि जिवो सो से माने कोन इंडिविजुअल रहिबो अलग अलग रहिले एक्चुअली कोन आसो तार स्टेबिलिटी ता कमी जाउची ओके सो दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय आवर सेल मॉडल ओके सो एतकी देखिबा हमें अबाउट न्यूक्लियर सेल मॉडल एंड दिस आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तो कथाटा होची एतकी सो दिस कंक्लूड आवर तमर जो चैप्टर जोड़ा थिला हमरो ओके ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स राइट हमर सर जाय छी यूनिट टा सर आउ थेरेटी कहि दियंतो कोडा की एटा पा लास्ट पेपर अपन कोडा सेल मॉडल हां पॉइंट उडा हां ओके देखो एक्चुअली हमर जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिमते रहिला नै लिक्विड ड्रॉप मॉडल गोटे होची मॉडल म्यूट कर दियो माइक टा हां तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिमते हमरो किछि गोटे पॉइंट उडा सब एक्सप्लेन करला रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस सेल मॉडल एक्चुअली कोन करला तार अप्रोच टिक अलगा सेल मॉडल कोन कहला जिमती इलेक्ट्रॉन उडा तमरो ऑर्बिट चारि पटे बुल्लु चंदी ए माने डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्बिट रे अरेंज हेके रहउ चंदी न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियन गुडा माने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी सेम टाइप ऑफ सेल अरेंजमेंट रे अछंती बोली से फर्स्ट प्रूफ टा कहला ओके से कहला एंड से गोटे कहला एक्चुअली जिनस गोटे ताकि से एक्चुअली मैजिक नंबर कांसेप्ट टा देला दैट इज जदी न्यूक्लियस रे जदी ए नंबर ऑफ जदी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहउचंती देन दैट विल लीड टू हायर स्टेबिलिटी जदि ए मैजिक नंबर इक्विवेलेंट जदि रहिला देन इट विल लीड टू हायर स्टेबिलिटी ओके सो ताको एक्चुअली एडा दे तो देले थ्योरीटा ताको कोन कला हमर डे टू डे लाइफ माने इवेंट उडा माने जो एलिमेंट उडा जो होछन से माने को प्रूव करले जे ना एडा ठीक अछि केमदि ठीक अछि तो फर्स्ट पॉइंट देखो हमर जिमती इनर्ट गैसेस रे हमर जिमती ए जो इनर्ट गैसेस जो रहिला एमाने कोन कोन आउटर मोस्ट सेल फिल होछंती तो से पे एमाने कोन स्टेबल स्ट्रक्चर कहीं ना को इलेक्ट्रॉन दरकार ना माने इलेक्ट्रॉन का को देबे सो दे आर स्टेबल सिमिलरली न्यूक्लियस रे मैजिक नंबर भी से बडा काम होय करछि जदी कोनो से ले न्यूक्लियस रो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जदी हमरो मैजिक नंबर इक्विवेलेंट हे गेला सो दे आर अकॉर्डिंग वेरी हाई स्टेबिलिटी माने ना तांको बेसी ना तांके न्यूट्रॉन देबे ना तांको न्यूट्रॉन दरकार सो दैट इज विल इक्विवेलेंट विथ आवर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जोटा कि हमर प्रपोज करथला थ्योरीटा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट टा कोन कहला केतरा आइसोटोप रो एक्चुअली कोन अछंदी जो आइसोटोप मैजिक नंबर समान शो करूचंदी दे हैव मोर देन 60% अबंडेंस माने तांकर अवेलेबिलिटी बहुत अधिक रहउचे एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट एग्जांपल देखो टीन आसिला तार 10टा स्टेबल आइसोटोप अछि कैल्शियम रो 6टा स्टेबल आइसोटोप अछि कोन पे काहे ना कर देखो नंबर आर 20 आसला आर 50 आसला 20 भी गोटे मैजिक नंबर 50 भी गोटे मैजिक नंबर सो मैजिक नंबर आसला मन कहले दैट इज गिविंग टू माय हाई स्टेबिलिटी ओके सो एटा गोटे प्रूफ हेला सो तीनटा पॉइंट हे गेला ओके सो नेक्स्ट देखो तमरो लीड केस रे एबे देखो तमरो जो यूरेनियम सीरीज रो एलिमेंट आसला एक्टिनियम सीरीज रो एलिमेंट आसला थोरियम सीरीज रो एलिमेंट आसला ए माने जेतोले रेडियोएक्टिव डिके होंती सो दे ऑल डिके टू लीड 80 to 208 तो एटा लीड 80 to 208 रो रीजन कोन एबे जदी हम लीड रो कैलकुलेशन करबा जेड और प्रोटॉन नंबर हला 82 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन असला 126 बोथ 82 एंड 126 आर कोन मैजिक नंबर माने मैजिक नंबर दीटा को जतो मैजिक नंबर हे जाउछंदी दिस लीव्स हायर स्टेबिलिटी सो सेट नै तमर ए एलिमेंट उडा कोन हायर स्टेबल उडा पीबी को माने डिके होउछंदी सो दैट इज आल्सो ए प्रूफ दैट मैजिक नंबर कांसेप्ट ठीक नेक्स्ट न्यूक्लियस तमरो जो हेले न्यूक्लियस रे तमरो मैजिक नंबर इक्विवेलेंट रो जदी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहि जाउछंदी दे कैन नॉट कैप्चर ए न्यूट्रॉन बिकॉज़ सेल्स आर क्लोज्ड एंड दे कैन नॉट कंटेन एक्स्ट्रा न्यूक्लियन सो जोली हमर सपोज देखो जो तमरो हे गेला जो हेले केस रे सपोज हीलियम गैस हे गेला सपोज तो और नियॉन गैस हे गेला सपोज नियॉन सो नियॉन एक्चुअली 10 2 8 तो आर ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल तो फिल हे जाय छै ना
तुम चाहिए यार इलेक्ट्रॉन बाहर भी कर कि आपको इलेक्ट्रॉन दे भी पार नहीं कहीं ऑलरेडी फिलअप हो जाए ओके तो सेमती जो न्यूक्लियस तुम मैजिक नंबर इक्विवेलेंट जदि तुम पड़ी आसला कौन तुम नंबर ऑफ न्यूक्लियन आउ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दबाटा कष्ट हो जाए कहीं ऑलरेडी फिल होती एंड दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर सिस्टम ओके सो यहाँ गोटे प्रूफ होगा एंड नेक्स्ट लास्ट है तुम कौन आइसोटोप्स आर स्पॉन्टेनियसली न्यूट्रॉन इमिटर ऑफ बीटा डीके तो 3टा एलिमेंट ऑक्सीजन गोटे आसला 817 क्रिप्टन 3687 एंड जेनन 54137 तो ये केस देख नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेशन करो ये 9टा आसला ये 51टा आसला ये 23टा आसला सो व्हिच आर वन मोर देन द मैजिक नंबर एटा 9 होचे 8 + 1 50 + 1 82 + 1 8 50 एंड 82 आर व्हाट मैजिक नंबर तो एमान कौन मैजिक नंबर गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अच्छा गोटे नॉट इलेक्ट्रॉन गोटे न्यूट्रॉन गोटे एक्स्ट्रा अच्छा माने दे कैन इजीली स्पॉन्टेनियसली माने न्यूट्रॉन इमिट करि परिबे न्यूट्रॉन इमिट कले कौन आसला मैजिक नंबर अचीव कला हाई स्टेबिलिटी पड़े आछी राइट सपोज सिंपल एग्जांपल देखो सपोज आम एग्जांपल लेबा सोडियम रो एटॉमिक नंबर केते 11 माने कौन आसला 2 8 1 आसला यार तो गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अच्छे यार सो गोटे इलेक्ट्रॉन से इमिडिएटली लूज करी कौन आसो Na+ आसो से इलेक्ट्रॉनटा क्लोरीन ये करके NaCl लेके हमर बॉन्ड फॉर्मेशन होतला एटा पढ़ाई जो तुम राइट एठी भी तुमर कोन होचंदी माने मैजिक नंबर रो गोटे न्यूट्रॉन तांगर एक्स्ट्रा अछि जोटा तांको दरकार नै गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे न्यूट्रॉन जदि माने इमिट कर देबे then they will achieve the magic number that will gives to higher stability समस्त एक्चुअली जतके एलिमेंट हला जतके न्यूक्लियस असला ऑल वांट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समस्त एनर्जी सब मिनिमाइजेशन रहबो समस्त स्टेबिलिटी दरकार सो जुएल प्रोसेस से माने ये करबे सेट में एक्चुअली समान कौन करेंगे गोटे गोटे न्यूट्रॉन एक्चुअली से इजिली स्पॉन्टेनियसली इमिट करें ओके एंड आउ गोटे कनसेप्ट तुम इवेन ऑड ऑर्डर न्यूक्लियर सो देखा जाए इवेन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अधिका एज कंपेयर टू ऑर्डर सो दैट इज बीन एक्सप्लेन बाय पॉलिस प्रिंसिपल कौन जो इवेन रोचे सो यहाँ प्रोटॉन रहा है न्यूट्रॉन रहा सो प्रोटॉन भी इवेन आसो पेयर आसो न्यूट्रॉन भी पेयर आसो तो पेयर आसला मन कले कौन सो दैट विल लीड टू एनर्जी मिनिमाइजेशन and that will lead higher stability but odd हेले कौन आसला गोटे गोटे लेवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने कौन एठी गोटे रहबो एठी गोटे रहबो गोटे रहला अपन स्टेबिलिटी बेले आसीबोनी डिस्टेबल हो राइट गोटे जदी इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन और गोटे न्यूट्रॉन रहला माने सो इवन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑड सो दैट इज एक्चुअली ऑल अबाउट सेल मॉडल हैला सेल मॉडल मतलब मैजिक सेल मॉडल इज एवरीथिंग अबाउट व्हाट दिस मैजिक नंबर हैला सो मैजिक नंबर रो जदि आसला सो दैट विल गिव्स अ हायर स्टेबिलिटी जोटा कि तुम एक्सपेरिमेंटली भी तुम प्रूव हो सब जिन ओके सो तुम कह सर यही नंबर गुड़ा कौन पर अच्छे तार एक्चुअली तुम पढ़ा पड़ो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है तो आम जो न्यूक्लियस भितर जो स्पिन रोचे इलेक्ट्रॉन माने तुम स्पिन रोचे स्पिन गोटे जिन रहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहा सब कपलिंग है तुम एक्चुअली सब स्प्लिट हम एगुड़ा सब जाक अच्छे डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट हम से 1s हाफ 2s हाफ सब अच्छे एगुड़ा सब डिटेल आम जाना नहीं बहुत गुटे जिन अच्छे से तुम हाई स्टैंडर्ड एक्चुअली तुम देख है सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस टॉपिक